वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। टू डिस्प्ले मोर ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑन द स्क्रीन इन प्रिंट लेआउट व्यू, द डैश कैन बी हिडन। वाइट स्पेस एट द टॉप ऑफ द पेज, वाइट स्पेस एट द बॉटम ऑफ द पेज, ग्रे स्पेस बिटवीन पेजेस, और all of the above, and the correct answer is all of the above. Next question is gutter position can be set in following position: left and right, left and top, left and bottom, left only, and the correct answer is left and top. Next question is what is gutter margin? And the options are margin that is added to the left margin when printing, margin that is added to right margin when printing, margin that is added to the binding side of the page when printing, margin that is added to the outside of the page when printing, and the correct answer is margin that is added to the right margin when printing. Next question is gutter position can be set in following positions: left and right, left and top, left and bottom, left and left only, and the option is left top is the correct option. Next question: to advance rightward from one cell to the next in the table, tab, backspace, home, and delete, and the correct answer is tab. Next question: a dash is not attached to an edge of the word window. That is, it displays in the middle of the word window and can be moved anywhere in the window. Floating toolbar, scroll bar, status toolbar, or menu bar, and the option is floating toolbar. Floating नाम से आपको ही पता चल रहा है कि वो फ्लोट कर सकता है, हम उसको कहीं भी ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं. It's like a floating. नेक्स्ट क्वेश्चन: पेज अप की क्या करती है एमएस वर्ड में? मूव्स द कर्सर वन लाइन डाउन, मूव्स द कर्सर वन स्क्रीन अप, मूव्स द कर्सर वन स्क्रीन डाउन, मूव्स द कर्सर वन पैराग्राफ डाउन. जैसे कि पेज अप की अप से पता चल रहा है कि वो अप की तरफ करती है, तो इसमें जो भी आंसर हमारा अप का है वो हमारा करेक्ट होगा. मूव्स द कर्सर वन स्क्रीन अप, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन: control plus page up is used to move the cursor one page up, moves the cursor one paragraph up, moves the cursor one screen up, moves the cursor one line up, and the correct answer is moves the cursor one page up. Next question: which of the following helps to reduce spelling error in the document? Auto format, autocorrect, smart tags, all of the above, and the correct answer is autocorrect. Next question: what is the use of all caps feature in MS Word? MS Word में all caps नाम का जो फीचर है वो किस लिए यूज किया जाता है या उसका क्या यूज है? It changes all selected text into capital letter. It adds caption for selected image. It shows all the image caption, none of the above, and the question answer is it changes all the selected text into capital letter.